to 30 Yard Circles, episode number 4, where we come back to Pakistan cricket. Essentially, something that's going to be our targeted theme for this podcast. We will be essentially doing most of our episodes on this, and so yeah, something that's going to get a lot of attraction. We really hope from the viewers. So it's a general discussion about Pakistan cricket, about the NOC refusals, selection committee changes, and basically the surgery that was expected to happen. So yeah, starting with what's recently happened. Aram, what do you think about the NOC refusals for the three format players, all format players essentially? Yeah, I think कि बहुत एक तो it is a double-edged sword. You cannot comment on one side without referring to the other side of the argument. Uh, both sides have their merits. एक तो ये बात कि this all matters today. ये सारी बात हम कर रहे हैं. We're talking about it right now because of the performance of the players. Ideally, it should not have been like that. ये एक system के तहत होना चाहिए था. There should have been a proper mechanism in place. कि we this all of this discussion had to be done without looking at the performance. This was just to be. आपने workload की बात की है. Basically, the NOC refusal में जो चीज़ that the thing that has been referenced, the you could say जो बहाना बनाया गया है, if you're talking at in a negative connotation, या फिर आप ये कह रहे हो कि they do not want the players to to play a lot of games which are not for their national side because they feel कि वो overwork हो जाएंगे फिर they want to manage the workload of the players. So इस बात पे अगर आप देखते हैं तो why does this matter more right now? ये पहले क्यों नहीं मैटर करता था? We have seen these same players. ये जो अभी कनाडा में जो T20 है उसकी बात हो रही है, इससे पहले भी रिजवान हैज प्लेड ओवर देयर. दीज प्लेयर्स हैव प्लेड ओवर देयर. उसके अलावा शाहीन प्लेड इन द IL T20 while ago. उससे पहले दे प्लेड इन अदर टूर्नामेंट्स. BPL में खेला. बाबर प्लेड इन द लंकन प्रीमियर लीग. इस साल एशिया कप और इन श्रीलंका, आई थिंक उस साल की बात है. सो ये सारी चीज़ें हम आप देखोगे, इफ़ यू लुक एट ऑल ऑफ दिस, आई थिंक हाइंडसाइट में द मेन फोकस उसी बात पे आता है कि जो रिसेंट हैपनिंग्स है, ये जो सर्जरी वाली बात आपने की, ये सब दिस ऑल it goes round in circles. You cannot look at a separate thing independently and comment on it. You'll have to look at all of these things, and I think हम इसको further deconstruct करेंगे कि ये क्यों ये steps लिए जा रहे हैं. क्या ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, प्लेयर्स और फैंस में जो डिस्कनेक्ट है उसको यूज़ किया जा रहा है इन ऑर्डर टू फ्यूल certain purposes. तो वो ये different factors हैं. You could not just look at it in one way. But just as an introductory statement, ये बात तो है कि mechanisms like these for the NOCs of players need to be set in place. I do not essentially agree with all the steps that have been taken here. This manner में इन्होंने ये काम किया है, इससे भी agreement नहीं है. But इस बात पे तो all should be in agreement, all stakeholders के there needs to be some sort of a mechanism, check and balance set in place कि जिसकी वजह से आप डिफरेंट मेट्रिक्स के ऊपर प्लेयर्स को जज कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस को, और फिर उसके बेसिस पे आप उनको रिवॉर्ड करेंगे और यू विल बी रिवॉर्डिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन फिजिकलिटी. यानी हर प्लेयर का डिफरेंट फिजिकल कंडीशन होती है. सो जब आप वर्कलोड मैनेज कर रहे हो, फॉर अ बैटर इट हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट, फॉर अ बॉलर इट हैज़ टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. तो आप सबको उस एक ही क्या वी से इन उर्दू के एक ही लाठी से हाँकना. So you essentially using the same thing for everyone else. So I think कि इसको थोड़ा सा diversify करने की ज़रूरत है, फिर हम better judge कर पाएंगे इसको. Yeah, I think Usman Samiuddin has written a great article about this issue, and one thing that he mentioned, I mean, it really hit me. कि सीना में not probably South Africa but generally Australia, England and New Zealand, यहाँ पे जो है वो NOC are essentially एक formality होती है. It doesn't make a headline कि NOC नहीं मिल रहा, NOC नहीं मिल रहा. And this was something I tweeted as well कि a lot of players over these years have actually missed IPL seasons. Mitchell Stark missed a lot of IPL seasons. Pat Cummins also decided not to come, and it's fine. Ben Stokes also did it.
and it was always presented as a player's decision, or at least the mutual decision between player and the board. And that sort of keeps the respect that a player needs in the circuit, right? इस तरह नहीं होता कि कि इस तरह के एक प्लेयर जो है वो जाके परमिशन मांगे एंड देन जो है वो बड़े साहब बैठे थे उन्होंने मना कर दिया, नहीं कोई नहीं जाएगा बाहर, ऑल दैट स्टूपिड शिट। द प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे एनओसी को जो है वो पावर टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ये। And this is, I mean, it is ridiculous, and the whole idea that you talked about कि जो है वो it should be player by player, not something जो कि एक general rule बना दें। The whole problem is कि उसके लिए जो है वो इन्हें जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। They have to look at the player case by case। तो बस इन्होंने एक rule बना दिया और बस सबसे वो सब follow करेंगे। हाँ, And ये yeah, वही बात, जस्ट टू ड्रॉ पैरेलल के पाकिस्तान में किस तरह चलता है कि ये वाली बात, इफ़ यू लुक एट हाउ दे इम्प्लीमेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इन पाकिस्तान, अब ये वाली बात जो हुई थी कि प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट फॉर ऑल फॉर्मेट्स यू हैव टू प्ले फर्स्ट क्लास। You could agree for certain things कि भाई आप टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर हो और you play for the ODI side, तो आप लिस्ट stay और फर्स्ट क्लास खेलते हो। But if someone has to play, someone is predominantly an ODI, a T20 player for example, तो उसके लिए getting those long hours into first class and list stay won't matter that much. थोड़ा बहुत तो फायदा होगा obviously, but you'll be wasting that opportunity where that player could potentially be playing leagues outside in other countries and gaining much valuable experience and interest. तो इसकी बात ये है कि अभी टेंड टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ सिंगुलर स्कोप और फिर उसी के ऊपर हम सबको जज कर देते हैं। आप कंपैरिजन करो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं विद द प्लेयर्स यू टॉक अबाउट द सीना कंट्रीज, तो एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि व्हाई डू आवर प्लेयर्स फील द नीड to go abroad and play these leagues? तो why do they the players over there, उनमें और यहाँ में क्या difference है? यानी नहीं, I'm talking about I feel like everyone feels a need to make some more cash, honestly. But वही हाँ idea, exactly, general but discussion होता है, हाँ the general discussion like adults between the player and the members of the board on equal on equality की basis। yeah, yeah, I agree, मैं वही पॉइंट पे आ रहा था कि द डिफरेंस इज दोनों जगह के प्लेयर्स को दे रिक्वायर, दे नीड द दे हैव द नीड टू गो अब्रॉड एंड प्ले द अदर लीग्स, बट द ओनली डिफरेंस इज कि वहाँ पे इट इज़ नॉट समवॉट कि एक तरह से कंपल्जन नहीं है। जैसे यहाँ पे इफ यू लुक एट प्लेयर्स हु आर नॉट इवन पार्ट ऑफ द नेशनल सेटअप राइट नाउ, कुछ प्लेयर्स who are on and off, they tend to go on and play these leagues because they want to earn that money, और वो जो कैश जनरेशन वाली बात है। बट वहाँ और यहाँ क्या डिफरेंस है कि द बोर्ड ओवर देयर सपोर्ट्स द प्लेयर्स financially through every problem, every situation, every high and low of their career। भाई यहाँ का काफ़ी डिफरेंट, एक तो द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स आर वेरी डिफरेंट, इस पे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो द प्लेयर्स जो वो मनी जनरेट करते हैं उसका कितना परसेंटेज, ये पूरी वो ज़का अशरफ के टाइम में जो पूरी मसला जो हुआ था, द थिंग दैट स्टार्टेड, इसकी वजह से यू कुड से दैट ये डोमिनो इफेक्ट है जो अब प्लेयर्स फेस कर रहे हैं बेसिकली फॉर देम स्टैंडिंग अप एट दैट टाइम। आई थिंक उसकी वजह से भी है, बट आई थिंक essentially ये बात है कि इफ पैट कमिंस डज नॉट वांट टू प्ले द सीजन ऑफ द आईपीएल, ही इज रेजिस्टिंग दैट दैट हैवी monetary benefit, so he knows he has the backing from his board and the financial backing from his board as well. But if Babar Azam, for example, who is a star cricketer of our country, feels the need other than the need to gain valuable experience, I'm not talking about that only, मैं सिर्फ monetary basis की सब बात कर रहा हूँ कि if he feels the need to go and play in a league where he feels that he'll be able to make quick cash for that saying, so उस पे ऐसे क्या कंपल्जन सेल्फ इंसर्टेड और सेल्फ असर्टेड है कि ही फील्स द नीड टू डू दैट। तो आई थिंक एक ये भी डिफरेंस है बिटवीन द टू सेट्स ऑफ नेशंस। एक जो सीना कंट्रीज हैं, दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो प्ले द आईपीएल, पाकिस्तानी प्लेयर्स डू नॉट हैव दैट, एक ये फैक्टर भी है। बट ऑल ऑफ दिस इस सबको अलग रखते हुए भी अगर आप सिर्फ स्किल टू स्किल भी कंपैरिजन करते हैं, सो व्हाई इज इट कि हमारे पास जो स्किल्स हैं
उसको डेवलप करने में डोमेस्टिक क्रिकेट से ज़्यादा द प्लेयर्स ट्रस्ट इन गोइंग to the leagues of other nations and playing over there with international competition. हमारा जो domestic structure है वो I know every domestic structure is not equivalent to an international structure or international league, but फिर भी क्या इतना खराब इतना ही ख़त्म हो गया है वो it is so downtrodden कि they're not even trusting that at the moment and they want to play more and more leagues, and फिर the board steps in to make the decision to eventually stop them कि we have a our FTP consists of more than 9 T20s and a lot of ODIs in the but for the next year we have the Champions Trophy next year as well. उस पर बात करेंगे. But I think सब में both sides के arguments you have to say. Essentially there would have been a logical argument here कि एक statement निकलती कि you should have known कि भाई this side is right or this side is wrong. But I think कि इधर ये बात हम कर नहीं सकते. We could not discredit one side's opinion. The board obviously वो कह रहे हैं कि हम प्लेयर्स के इंटरेस्ट पे बात कर रहे हैं because we feel कि workload management is key. Players obviously want to earn that money, or they want to use their prime performance to start generating some income for themselves, and apart from that they also want to gain international experience. But ये दोनों बातों को आप एक साथ रख के जज करें भी, तो आई थिंक कि कोई सेगवे कोई मिडिल पाथ कोई जनरेट किया जा सकता है. आई आई फील लाइक कि वही जो हमने पहले बात की थी, जो एनओसीज वाला बात थी, कि इसको प्रॉपर कंसल्टेशन के थ्रू रादर देन फाइटिंग दीज मीडिया वॉर्स के एक दिन खबर आती है थ्रू एनी एक्स जर्नलिस्ट के these number of players have asked for the NOCs to play in such and such leagues. Players ने social media post करना start कर दिए कि they are you know preparing for the leagues, they are getting into the grooves. उसके बाद we have a press release from the PCB another day which states कि भाई the players asked for these NOCs which we have declined due to so and so reason. तो ये बात आप पब्लिक के सामने क्यों कर रहे हैं? दिस इज समथिंग दैट यू Yes. शुड हैव डन इंटरनली. प्लेयर्स के साथ आप डिस्कस करते कि इतना डिस्कनेक्ट आ गया बिटवीन द प्लेयर्स एंड द बोर्ड कि you have to do all of this publicly. No, no, no. It's not the disconnect. It's not disconnect. इसमें ये दिखाना है कि like we are the ones जो कि side decisions लेंगे and these players are totally under us and they are our subordinates and they are essentially employed by us. हम तो इतना ज़्यादा pay करते हैं इन्हें. As in you know how Zaka Ashraf said एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में after that central contract से issue के मैंने दिए इतने सारे पैसे कि टीम जो है वो इंडिया जा रही है stuff like that. I mean, literally, it's like saying ke, it's like bragging about paying taxes. Like it's literally your job to pay these players well. इन्हीं की वजह से जो है सारा revenue आता है. It is so ridiculous. I mean, it just I think it sort of represents the wider society के trends honestly. Because उसमें भी जो government officers के जो attitudes होते हैं and essentially the पावर में जो ऊपर होता है वो जो नीचे वाले को ऑप्रेस करता है. The whole idea about that. But I wanted to talk about how you said that some players want to go and get some international experience, and it can be really beneficial for them in a lot of ways, not just in cricketing ways. It sort of gives you a great idea and exposure about the world around you. It teaches you a lot of things. You meet a lot of people, and I want to give an example of Qasim Akram. You might remember how Qasim Akram was sort of said that he will be the next big thing in around 2021, and he was performing really well as well. So उस time पे जो है, he got a contract with St. Kitts and Nevis Patriots, and then PCP just didn't allow him to go. I mean, a player like Qasim Akram, who's not in the national side at that moment, and I don't think we plan with us in Laneka. Like, why would you make him play the national T20 instead of CPL, where he would meet so many incredible players from all around the world? He would learn so much, and that would have been a life changing flight for him, a flight to Caribbean for him, and I'm sure he would have improved himself a lot. I mean, we saw with Naseem Shah how he sort of got onto the bench for Pakistan team, and then once he played the CPL with again St. Kitts and Nevis Patriots alongside Dwayne Bravo,
You saw the improvement that he had, especially in his limited overs bowling. And so it is ridiculous, honestly, and that is why I just keep on saying कि पाकिस्तान की एक players association होनी चाहिए. या आई एग्री आई थिंक कि हमने पहले भी ये बात की थी बिफोर ऑल ऑफ दिस पॉडकास्ट वाली बात कि व्हेन वी यूज्ड टू बी लाइव एट एआरडी विद अहमद भाई कि प्लेयर्स एसोसिएशन इज द नीड ऑफ द आवर और ये सब बिफोर द वर्ल्ड कप ये सब पहले की बात थी व्हेन the team was not that bad, people were performing. हमने उस वक्त भी ये बात की थी कि the player association is the need of the time. आई थिंक दो चीज़ें हैं हमारी जो जजमेंट होती है दैट इज़ मोर परफॉर्मेंस बेस्ड पूरी दुनिया में इस तरह होता है कि जो भी फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं किसी भी उसकी हाउ यू पेइंग द प्लेयर्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसको दो उसमें डिवाइड करते हैं एक तो जो रेंजेस होती हैं what amount you're playing to the player is not directly linked to the performance of the players. You have you divide certain segments of your players कि हम इतने इस amount of players को for example we have the central contract उसमें you have category A, B and C. So आप ये divide करते हो कि category A को इतनी अमाउंट मिलती है और कैटेगरी ए के अंदर जो प्लेयर्स फॉल करते हैं उसकी फिर एक अलग दैट इज समथिंग दैट कम्स अंडर द परफॉर्मेंस बेस्ड जजमेंट आई थिंक हम डिफरेंट मेट्रिक्स को डिफरेंट टाइम्स पे इंटरचेंजेबली कंफ्यूज कर देते हैं एज even fans do it but I think officials doing it is something that hurts the most कि ये बात एक स्वीपिंग स्टेटमेंट डाल देना कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो हम फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स को रिविजिट करेंगे यू कैन नॉट रिविजिट द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स आप परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को रिविजिट करते हो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस बट यू डू नॉट आप ऐसे नहीं करते कि एक टूर्नामेंट में टीम ने अच्छा नहीं किया तो यू रिड्यूस द अमाउंट यू पेइंग टू द कैटेगरी ए प्लेयर्स वो अमाउंट रिमेन्स द सेम फॉर द एंटायर कैलेंडर या तो आप आपकी जो एक सेट कैलकुलेशन है या आपका एक टाइम पीरियड टाइम बाउंड एग्रीमेंट है वो कंप्लीट होने के बाद आप रिविजिट करें तो दैट इज समथिंग Yeah. वेरी डिफरेंट बट इफ यू डूइंग इट मिड सीजन यानी अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी है ऐसी भी नहीं है कि यू आर कम्प्लीटली चेंजिंग द टीम आप प्लेयर्स को बिल्कुल शफल कर रहे हो ऐसी भी कोई बात अभी तक नहीं हुई है वी हर्ड कि सर्जरी होगी या ये होगा बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि 11 में से जो है वो आठ आठ लड़के जो है वो टीम से बाहर जा रहे हैं ऐसा कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं देखा है हमने कि भाई आप पूरी टीम को ही जम्बल कर रहे हो सो जब आप ये नहीं कर रहे हो तो मिड सीजन इन द सेंस के आप मिड इंटरनेशनल ईयर की आप ये बातें कर रहे हो कि फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स और इस सब की सो आई थिंक ये एक बहुत बहुत गलत बात है इन द सेंस कि यू ट्राइंग टू बिकम द गॉड फादर सॉर्ट ऑफ द Yeah. एंटायर क्रिकेट नेशन रादर देन बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर तो ये बहुत I think that's something that brings the morale also of the players pretty down. I was working somewhere a month ago. तो वहाँ पे it was an organization related to education. तो वहाँ पे वो बात reiterate करते थे कि instructors are supposed to be facilitators, not not essentially instructors. Like instruct नहीं करना, they need to facilitate the process, Yeah. and that is what the process that is what the job uh, of these administrators is as well. कि उनका काम फैसिलिटेट करना है पूरे प्रोसेस को हेल्प करना है असिस्ट करना है प्लेयर्स को बिकॉज प्लेयर्स आर एसेंशियली व्हाट द बोर्ड इज अगर प्लेयर्स नहीं होंगे तो बोर्ड नहीं होगा बट यहाँ पे अगेन एज यू सेड कि दे एक्ट लाइक गॉडफादर्स एंड स्टफ एंड इससे मुझे यही याद आया कि वी सॉर्ट ऑफ हैड a model of players association uh, through this Saya Corporation, right? I mean, Yeah. players को manage करने की थी, but then they sort of got together and fought themselves fought against the PCB and got some good contracts, which was a great thing. I really liked it. But then उसके बाद भी, if you remember, there was so much hostility and they created fake scandals out of nowhere कि जो ये company थी UK में and then everyone's together of selection जो इस तरीके से हुई है and literally the chairman was doing that stuff. It was just so ridiculous and sad at that point. Yeah, just to add on to it, अभी आप अगर Twitter follow कर रहे हो recent past couple of weeks में, so there's been a lot of hostility shown towards Saya Corporation as well. I think
और स्पेशली ड्यू टू बाबर, रिजवान, शाहीन एंड देन वो अभी जो पूरा ये इस ट्रियो के साथ जो फियास्को चल रहा है, इस सब के सराउंडिंग भी फैंस और स्पेशली पीपल हु हैव अ बिट ऑफ फॉलोइंग ऑन ट्विटर, तो वो भी ये बात कर रहे हैं कि इसेंशियली साया कॉरपोरेशन ने मिस हैंडल किए हैं काफ़ी चीज़ें. So I am not sure कि how do a player representation sort of do this कि एक बेसिकली साया के पास कोई अथॉरिटी एज सच नहीं है. देर ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेयर्स ना. तो हम ये कैसे बात कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग में उनका रोल होगा प्लेयर्स के साथ. बट वही बात आ गई कि प्लेयर एसोसिएशन को थोड़ा सा आप डिफरेंटली भी देख सकते हो. It could be running parallel to the board, or it could be a part जो कि communicate करे with the board but Yeah, also is the representation of the player. So we have essentially two different models for a player association that could be implemented within the Pakistani circuit. I think कि ये दो models होना इसलिए भी ज़रूरी है different for as options, क्योंकि पाकिस्तान का climate बहुत बहुत it is very वो जो वर्ड पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यूज किया जाता है क्वाइट ऑफन के मर्क्यूरियल है. यू कैन नॉट जज इट एट इट्स हाईएस्ट और एट इट्स लोएस्ट बिकॉज इतनी शफलिंग हो रही होती है. इट इज़ नेवर इन अ स्ट्रेट लाइन. सो फॉल बैक ऑप्शन हमेशा होना चाहिए. सो आई थिंक ये जो दो मॉडल्स मैं इनकी बात कर रहा हूँ, एक तो ये कि दे शुड बी अ सेपरेट organization as a players association जो essentially is run by people who are involved, have been involved with cricket. उसमें yeah. सब लोग हों, you have people who are financial experts जो कि contracts के लिए negotiate करें. You have people who are experienced in the health and sports medicine जो कि players injuries के बारे में negotiate करें. There are loads of things जिसके लिए space available है for these players association. But side by side जो मैं हाँ Yeah, you yeah, go. yeah. Please, go on. मैं दूसरे मॉडल की जो बात कर रहा था, दैट कुड बी समथिंग दैट ऑपरेट्स विद इन द करंट क्रिकेटिंग एटमोसफेयर. किस तरह से कि you have the board. Now it works sort of under the board, but it will have enough authority over everything else कि जो players की demands होती हैं, it channel its way through up that association to the board, और फिर वो दोनों आपस में they negotiate, they talk about ये सारी जो we are seeing this everything on social media right now, यही contracts वाली बात या फिर even NOCs वाली बात, ये सब बैक एंड पे बिहाइंड द डोर्स बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, द एसोसिएशन एंड द पीसीबी ये सब डीलिंग हो. उसके बाद दे कम अप विद द जॉइंट प्रेस रिलीज इन्फॉर्मिंग अस कि भाई ये डिसीजन हुआ है, प्लेयर्स की ये बात थी, बोर्ड सजेस्टेड दिस, वी केम अप विद द सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ दिस एंड दिस इज द डिसीजन. This is something that societies do who have well thought of plans or थिंकिंग मेट्रिक्स जिनके इन प्लेस होते हैं. हमारे यहाँ सब कुछ इतना हैphazardly होता है कि वन डे समथिंग एल्स एंड द अदर डे समथिंग रियली डिफरेंट. आई थिंक ये मॉडल्स थे दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड राइट नाउ विद इन द करंट सिस्टम. इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ओवरहॉलिंग की ज़रूरत नहीं है. सो या आई थिंक ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है. Again, the haphazard models of Pakistan cricket are sort of representative of the wider society and wider government structures. I mean, perhaps we don't want to go there, but you mentioned how okay, professionals different areas के हो सकते हैं, sports medicine and financial finance experts or the finance guys. People are going crazy over 6'5" blue eyes. But इसके अलावा जो है वो yeah, so and what I was trying to say was that we have a lot of great people in our cricket circuit में इतने सारे अच्छे लोग हैं. They all can sort of come in and uh, play a part in making a Pakistan Players Association. But I'll just want to move on towards the selection committee वाला जो idea है. So the update is that both of the coaches will be part of the selection committee. I think the captain will be part of the selection committee too. Yep. And then alongside Wahab Riaz and Abdul Razak have been sacked. Muhammad Yusuf and Asad Shafiq are there. And so yeah, this is basically what the selection committee will be for Pakistan men's cricket. And I feel like it's quite a non-toxic selection committee with the removal of Wahab and Razak.
आई थिंक essentially जो पहली वाली सिलेक्शन कमेटी थी, it was essentially only वहाब एंड रजाक. आई डू नॉट थिंक कि असद शफीक ने मे बी इतना इनपुट दिया होगा, या उनका इनपुट इतना. आई नो दैट ही हैज़ अ ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड, हैज़ प्लेड a lot of cricket for Pakistan internationally and domestic में बहुत बड़ा नाम. He is one of the greats that Karachi have produced. But I think कि उतना इनपुट आई डू नॉट थिंक कि असद शफीक ने इतना दिया होगा. अब वहाब का वी सॉ इनपुट एवरीवेयर इन द पाकिस्तान क्रिकेट सेटअप फॉर द पास्ट दिस, ये जो छोटी सी पोर्शन और साइकिल गुजरा है अभी क्रिकेट का हमारा, कि ही बिकेम पार्ट ऑफ द टीम सर्किट एज वेल, टीम मैनेजमेंट में भी थे. ही वाज देयर इन द सिलेक्शन कमिटी एज वेल. He was the unofficial partner to the PCB chairman, or you could say advisor to the PCB chairman as well. So ये तीन different roles पे he managed to flunk on all of them at different levels. So after that, I think it's a good sign that they have been removed. बट आई ऑल्सो फील कि ये वाली जो बात है कि आपकी सिलेक्शन कमेटी है, आई थिंक ये मॉडल इट्स नॉट दैट बैड. यू हैव टू हैव द इनपुट ऑफ द कैप्टन, द Hmm. कोचेस एंड a few selectors from the outside, so you could have an unparalleled view from the outside, someone who's not been involved directly with the team. So I think ये अच्छा सेटअप है. I think it should be given a good time to follow up, और फिर देखते हैं क्या बनता है. Yeah, yeah. It's always a great dilemma in cricket के selection committee final stage किसकी होनी चाहिए, whether it should be the selection committee the chairman, or should it be the coach or the captain. And I always believe it should always be the coach and the captain because they are the ones who know the actual realities of the cricketing structure and the dressing room, and so they will be the ones who will be answerable to media in press conferences after the games. So I've always been of the opinion that हमेशा captain and coach को होना चाहिए. And to be honest, I wasn't really uh, like a lot of people didn't like the model के वो captain के coach and selection committee के chairman एक ही as an example. I'm talking about the Misbah model. I मिसबा would, वाला. I mean honestly मुझे उतना कोई मसला भी नहीं था उससे, but या fair, yeah. इवन जो वो ड्यूरिंग द एहसान मानी वाले टेन्योर वाले जो बात थी कि यू हैड दिस रीजन्स वाली बात, कि द हेड कोचेस ऑफ द रीजन्स वर एसेंशियली दे मेड अप द सिलेक्शन कमिटी. तो मुझे तो वो वाला सेटअप भी इट डिडंट लुक एज बैड, बिकॉज एवरी स्टेक होल्डर had their stake in the selection essentially. The head coaches of different regions, they knew better about their players Yeah. and they could advocate for each selection. मुझे तो वो मॉडल, आई थिंक दैट वाज प्रीटी बेटर. उस पे भी काफी लोगों के दे हैड वो बायस वाली assumptions and all that, but I think कि जब इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं, so इवेंचुअली कोई अच्छा ही फ्रूट से निकलता है. सो आई थिंक मुझे तो वो वाली बहुत अच्छी लगी थी. बट आई थिंक दिस वन कुड वर्क एज वेल इफ इट इज गिवन द प्रॉपर टाइम एंड द प्रॉपर पीपल आर गिवन their chance to speak and have their input in it. So I think उससे काफी बेहतरी हो सकती है. One thing that I don't get is पूरे उसमें कि head coaches if they are part of selection committee. So like as an example, if Gary Christian is the coach of limited overs, will he be giving his input for the limited overs as well? No, Oh, I don't. for the cricket as well. So I don't understand. नहीं, आई डोंट थिंक इस तरह होगा. आई थिंक बाकी जो मेंबर्स हैं, द मेंबर्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट और essentially the captain, they will be the part of each selection committee for every format, and उस format का coach and that particular captain will be Yeah, responsible for yeah, that yeah. selection. I That think makes sense. this is Shan and Jason Gillespie will be part of the test one, and whoever is the next white ball captain, or Babar Azam, along with our coach Gary Kirsten, will be part of the limited overs. I think इस तरह If होगा. Babar Azam, God forbid, remains the captain. Fair. So moving on, uh, what do you want to discuss? Selection committee में there's also one guy, data analyst, Bilal Afzal. I think he's still part of the selection committee. Yeah, he. I think portfolio change हो गया. Now he's the advisor to the PCB chairman, and Hassan Chima has somewhat regained his position as the data man in the selection committee. I think ये बहुत better है.
uh, even if you had to have him as the eyes and ears of the chairman PCB in the selection committee, it's better कि एक ऐसी position पे हो कि आप announce करो कि he's just the advisor to the uh, chairman PCB, and the real data guy has to do what he had been doing before in an unofficial position. We No, all I know think Hasim had. I still think it is ridiculous to have a security guard of the chairman selection committee ताकि उससे communicate कर सके कि आपके खिलाफ बातें तो नहीं हो रही हैं, आपके कौन आपके एग्जैक्टली खिलाफ साजिश कर जी रहा जो मैं है. पहले पहले बात कर रहा था डिस्कनेक्ट और मिसट्रस्ट वाली, इट शोज कि हमारे स्टेक होल्डर्स में कितना मिसट्रस्ट है कि पीपल डू नॉट इवन ट्रस्ट द पीपल दे आर अपॉइंटिंग, कि आप किसी बंदे को ला रहे हो इन अ पोजीशन एंड यू आर स्टिल नॉट ट्रस्टिंग देम, सो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द फैक्ट कि वे वेर हेडेड एज इवेंचुअली एज अ सोसाइटी, द पाकिस्तान सोसाइटी, तो बहुत Fair. So we were asked to sort of discuss the domestic structure, but unfortunately, I have a life, so I haven't gone over it. And yeah, and honestly, things got so complicated when the departments came back that I couldn't really follow it सही तरीके से. And then this I'm yet to see this one, so we'll probably have a discussion on that in the next few episodes. And yeah, and just a comment on that, it sort of basically portrays के लोगों का अगर आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे तो लोगों का भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं आएगा. ऑब्वियसली. But I'm hearing some good things about the broadcasting and everything. Like they're gonna bring the broadcasting back, and they're appointing some great people in the domestic team. So it's sort of a hopeful vibe around domestic cricket in Pakistan right now. But thing is कि the people who are the administrators right now, and the way this country is going in general, you just cannot help but be pessimistic as well at the same time. या यू हैव टू बी एसेंशियली. पाकिस्तान में ये बहुत बहुत होती है कि यू ऑलवेज एक्सपेक्ट द वेरी लीस्ट, और उससे ऊपर जो भी मिल जाए सो यू बी हैप्पी ऑन इट. आई थिंक इसी फॉर्मूले पे हमें सबको चलना पड़ेगा विद रिगार्ड्स टू एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, क्रिकेट इज वेल, क्रिकेट इंक्लूडेड. आई थिंक एक बात हम शायद मिस कर गए थे, ये जो अनाउंसमेंट्स वाली बात हुई थी इसी में, कि दे सेड समथिंग अबाउट द फिटनेस स्टैंडर्ड्स इम्प्रूविंग और fitness Yes. test to be held after every, I do not know, 3 months. कितने months के बाद Three बात हुई, months. 3 months या 3 months. So ये भी एक sort of bringing back the yo-yo test vibes and Mickey Arthur vibes, baseball Haq vibes. I don't really mind that, honestly. The whole problem is that three Pakistan players will be so busy. Like they're like constantly playing cricket from August till PSL 2025 in April. So आप like बीच में like tour के बीच में test करेंगे. Like Uh, how does it work? या मेरा इस पे जस्ट एक क्वेश्चन तुमसे थोड़ा सा बाहर है, बट इट्स रिगार्डिंग द फिटनेस ऑफ द पाकिस्तानी प्लेयर्स. डू यू थिंक कि जो पाकिस्तानी करंट लॉट ऑफ प्लेयर्स है, सोशल मीडिया पे बहुत बात हुई है इस पे कि इनकी जो फिटनेस स्टैंडर्ड्स हैं, करंट फिटनेस स्टेटस जो है, इज इट इवन ऑन पार विद द अदर क्रिकेटिंग नेशंस अराउंड द वर्ल्ड, और यू कुड से कि अ फ्यू एक्सेप्शंस, बट उसके अलावा इट इज़ वेरी बैड, यू कुड से overall it's not that good. Do you agree? हाँ. So ये बात बिल्कुल सच है कि कि जो फिटनेस पे the kind of focus there was on fitness and under Mickey Arthur and Steve Rickson uh, उसके मुकाबले में बहुत कम हो गया है. And we've heard from sources कि जो है वो there was this talk around the team कि अब फिटनेस को छोड़ देना चाहिए, and we need to think about our skills, and we need to sort of keep going as we are, because we're good cricketers. And so yeah, fitness पे focus जो काफी कम हुआ है. But the whole idea about fitness general fitness in Pakistan cricket, I think वो तो फिर it goes from the goes uh, to the depth of the iceberg, right? Because वो तो फिर जो आप बाकी सीना में जो it's more about how stuff is done from the grassroots cricket, और वहाँ से जो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, प्लेयर्स की फिर जो खुद टेंडेंसीज जो डेवलप हो जाती हैं उस तरीके से. पाकिस्तान इज टोटली डिफरेंट. पाकिस्तान में प्लेयर्स की सिलेक्शन, प्लेयर्स का सिस्टम में आना इज़ वेरी
spontaneous as well. So, I mean, someone who's literally playing on the streets can come, and that shows the amount of talent in Pakistan cricket. But उसका एक sort of एक नुकसान भी होता है कि ये वो जो ट्रेंड्स एंड टेंडेंसी जो होती है प्लेयर के अंदर वो नहीं एग्जिस्ट करती एंड इट हैज टू बी सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियली डेवलप्ड बाद में जाके सो बट या But आई इन आई डू अग्री कि जो फिटनेस से फोकस जो कम हुआ है एंड आई थिंक इट वाज अ म्यूचुअल डिसीजन बाय द टीम दैट वाज टेकन बट आई थिंक कि इट्स मोर समथिंग मोर देन दैट कि उसकी वजह से फिटनेस की वजह से देयर हैज़ बीन एन इम्पैक्ट ऑन द प्लेयर्स परफॉर्मेंस एज वेल. आप इस बात को डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते कि द मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वर लीडिंग द बैटिंग चार्ट्स और टेकिंग मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स आर people who are essentially the fittest guys around cricket right now. या You could not argue with that. So इस बात को there's something दो अलग चीजें हैं. You have to be match fit and being a player who is match fit and being a player who एक तो फिटनेस के जो रिगार्ड्स हैं हमारे वो बहुत डिफरेंट है. पीपल से कि फिजिकली फिट होना दिखना कि बंदा फिजिकली फिट है इज समथिंग completely different than the player who's match fit because cricket की जो skills हैं they require a different level of fitness, different training, उसका regimen पूरा बहुत different होता है, different diet involve होती है. ये सब चीज़ें जो हैं ये जब हमारे players को I do not think they even have the idea कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं. I think इसकी तरफ हमारे बोर्ड को स्टेप लेना चाहिए था rather than just imposing a thing कि 3 महीने बाद फिटनेस टेस्ट होंगे. Now how will you be aiding the players to get fitter? आप उसके लिए क्या हेल्प करोगे? ये जस्ट एक एक बेंचमार्क रख देना कि हम 3 महीने बाद टेस्ट लेंगे जो फेल होगा और टीम में नहीं होगा. आप उनको क्या एड कर आपको पता है कि पास्ट कपल ऑफ इयर्स में आई थिंक मैं ये कहूंगा कि द फिटेस्ट साइड वी हैड वाज द चैंपियंस ट्रॉफी 2017 साइड. वी कुड आर्ग्यू दैट उसमें एक तो यंगर साइड थी, साइड दैट वाज इन द या यंगर फेज ऑफ देयर लाइव्स, तो एक वो फैक्टर भी था, ऊपर से थोड़े से फिट भी थे. दे हैड आई थिंक फिटनेस डायरेक्टली रिलेट्स टू द फील्डिंग परफॉर्मेंस. जब आप मैं कभी भी किसी टीम को खेलते हुए देखता हूँ, इफ आई लुक एट देयर फील्डिंग परफॉर्मेंस तो मैं जज कर सकता हूँ कि इस टीम की मैच फिटनेस और स्किल फिटनेस कितनी है. बट on the other hand, if you look at Pakistan and how they've been doing for the past couple of tournaments, तो आप ये बात कह सकते हो कि they're not match fit, completely fit, कि आप हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट पे इंटरनेशनली आप खेल सको. तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं दैट नीड टू बी वर्कड ऑन के प्लेयर्स को एक तो प्रॉपर आइडिया देना कि किस तरह की फिटनेस रिक्वायरमेंट है और उसमें उनको हेल्प करना. आई थिंक इसमें भी बोर्ड कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. दे नीड टू डू इट बट आई डू नॉट थिंक दे विल. प्लेयर्स yeah, खुद ये से कुछ 3 months, the fitness test and fitness every 3 months is just a slogan statement. It's just for the attraction of the media and how okay, the administrators have taken a decision and what a great decision it will be and stuff like that. वही जो fitness test every 3 months, oh हो भाई ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई. All that आई थिंक jargon. प्लेयर्स को खुद ही कुछ करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल इफ वी लुक्ड एट शान मसूद वर्किंग ऑन हिज स्किल्स व्हेन ही वेंट टू साउथ अफ्रीका अर्लियर ऑन. आई थिंक प्री 2018 की बात है ये कि Hmm. व्हेन ही फेस्ड अ प्रॉब्लम विद हिज टेक्निक एंड ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, ट्रेन्ड over there and eventually became a much better player, much better batter. So I think उस प्लेयर ने खुद अवेयरनेस इतनी थी कि he did that, went over there. I think most Pakistani players lack that eventual acumen that a player has. But I think कि उनको अगर थोड़ी सी भी अवेयरनेस दी जाए externally, so I think कि they won't mind doing it. But उसका जो effect है, positive outcome है, it is too great for them to be ignoring it right now. And I I think would they are ignoring it right now. I would totally disagree. I think we cannot compare someone who has generational wealth to people who have sort of come from the streets, right? तो वो एक No, मतलब they're मैं not ये even बात नहीं कर रहा हूँ कि द पर्सन हुज ब्रेकिंग इनटू द टीम करंटली फॉरेन जाके ये काम कर सके. वो डू यू थिंक कि प्लेयर्स एट फॉर ऐसी बात कर रहा हूँ मैं. फॉर एग्जांपल बाबर है और यू हैव प्लेयर्स लाइक हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी एंड मोहम्मद रिजवान. मैं ये नहीं कह रहा हूँ दीज आर अनफिट प्लेयर्स. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि द अमाउंट ऑफ टाइम दे हैव सर्व्ड प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव मेड. डू यू थिंक कि इनके लिए मुश्किल होगा बाहर जाके फिटनेस स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करवाना अपने लिए? as compared to Shan Masood. I'm sure it will be difficult because No,
they have I disagree. they have big families to cater. And also इसके अलावा ये भी है कि this is a responsibility of the board to send players for बोर्ड, training. The players can आई obviously एग्री, ask the board कि हमें भेजें. आई एग्री, बट आई थिंक अगर बोर्ड नहीं कर रहा होगा तो एनी सेल्फ अवेयर प्लेयर हु वांट्स टू डू गुड फॉर हिमसेल्फ एज वेल, भाई इवेंचुअली तो आपका ही करियर प्रोलॉन्ग होगा, यू विल हैव अ बेटर परफॉर्मिंग करियर, और लॉन्जेविटी इंक्रीज आप ही की होनी है ना. यू कुड forget about the national team, you could play other leagues as well, you could go into other playing leagues और आप वहाँ पे जाके Other पैसे भी leagues, अर्न कर सकते हैं. सो इट हाँ. वुड हेल्प यू. सो मैं ये बात कर रहा हूँ कि हेल्प इवेंचुअली इसका फायदा नेट फायदा आप ही को होना है, द प्लेयर विल बी बेनिफिटेड. तो you could work on yourself. I'm not saying कि it will be very easy, कि आपकी बात आई एग्री कि शान मसूद इज अ डिफरेंट केस, चलो उसको रिमूव कर दिया. मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा था कि he did something, जो एक्ट थी मैं उसकी बात कर रहा था. ऑब्वियसली एवरीवन विल हैव डिफरेंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस. मैं ये नहीं कह रहा कि गो अब्रॉड, you could work within the country. पाकिस्तान में भी there are people who would Yeah. help you in this regard. तो why not do something? But I think currently कुछ भी नहीं नजर आ रहा है ऐसा. We cannot see anything with this दैट regard. इज करेक्ट. या अवेयरनेस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है. मेरा वो वाला था कि आप खुद जाके आप खुद लोग हायर करें and बाहर जाएं. मुझे उस पर ऑब्वियसली कंसर्न था. बट या एज हर्षल गिव्स का ट्वीट, इट हैज सर्कल अराउंड ट्विटर एंड इवन Yeah. the recent bad language of Pakistan, Adam, I don't know, I can't pronounce his last name. Uh, उसका उनका भी यही स्टेटमेंट आया है कि like Babar is in his own world regarding his batting, doesn't want to take any advice. I mean, he can just sort of go and uh, work with someone like Said Anwar probably. I know he's a controversial person right now, but still there are a lot of people in Pakistan he can sort of go to and work with to sort of counter his problem with being at having an attacking approach in the power play, right? yeah, I do not know how true these statements are. कि obviously अब ये दोबारा they are circulating Two around people social are media. saying this. हाँ, I won't judge, I won't say anything क्योंकि we haven't heard from the other side. हमें दूसरी साइड की स्टोरी नहीं पता, so maybe they are true or not. But एक general fact है कि any athlete or any player, anyone who wants to perform at any stage, I think good advice, good training, and listening to other people is something that will always benefit you. Whether you are in any field of life, any walk of life, आप जब तक दूसरों की बात सुनेंगे नहीं, आप उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, यू डू नॉट वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग योर सेल्फ, आई थिंक कि तब तक यू विल नॉट बी एबल टू बी एट द टॉप ऑफ योर लीग. आप अपने सब प्लेयर्स में आपकी जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं आप उनसे compete कर ही नहीं पाओगे जब तक यू डू नॉट स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस. आई थिंक ये मैं किसी प्लेयर की तरफ डायरेक्ट करके नहीं कह रहा हूँ, एक जनरल बात है कि इफ यू नॉट वर्किंग टुवर्ड समथिंग, अचीविंग समथिंग गुड, आप उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लाना चाह रहे, यू ट्राइंग टू बीइंग इन योर ओन वर्ल्ड. आई थिंक एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम आउटकास्ट केसेस और जिसको हम कहते हैं एनोमलीज को लेकर समझ लेते हैं कि दीज आर ट्रूअर केसेस टू बी फॉलोड, केस स्टडीज बना लेते हैं उनको. कि एक प्लेयर के साथ फॉर एग्जांपल ये हुआ किसी एथलीट के साथ कि दे जस्ट स्टेड विद इन देमसेल्व्स एंड दे एक्सीडेड एंड सक्सीडेड, बट उसको सब पे इम्प्लीमेंट करवाना आई थिंक इज नॉट समथिंग गुड. बट आई थिंक अगर प्लेयर्स खुद उस पर फोकस करें सो दे मे डू इवेंचुअल गुड टू देम. Okay, so just final 2 minutes. So reports are obviously BCCI has denied it, but reports are that India won't be visiting Pakistan to the championship in 2025. What a surprise, Aram! Like I'm shocked. I couldn't sleep at night. Yeah, I'd be more surprised if they do visit Pakistan for the Champions Trophy in 2025, but I do not think it's happening. अभी जो current पाकिस्तान का भी हालात है, eventually everything that is going on will lead to this कि they will back out and we'll have to play them at a neutral venue. I think बाकी nations they will come. We'll Yeah, yeah, have of course, yeah. a league of our own over here, but I think we'll have to play India, maybe Sri Lanka or the UAE. I do not know UAE. अभी क्या. हाँ, The, but but I hmm, did feel कि थोड़ा सा bad in terms of कि like Pakistan visited India.
in 2023 World Cup, and the idea was कि अगर हम करेंगे visit तो India will come in 2025, but it sort of represent the power dynamics in cricket as well as in geopolitics. Okay, but Yeah, obviously, I think yeah, I have always said कि क्रिकेट को तीन हिस्सों में आप रखो. एक is the geopolitical nature of it, दूसरी is the financial discrimination amongst the nations और जो disparity है, and तीसरा is the main performance या आप कह लो playing cricket. ये तीन different factors हैं आप जिसको cricket को classify कर सकते हो. And I've always felt कि geopolitics and the financial disparity always comes over the eventual playing cricket. yeah. तो I think ये भी it is also the case of that only कि I think थोड़ा सा early भी है, we haven't heard, but I won't be surprised कि if they back out. So it's not something that is unexpected, but it would have been good to watch the- a great Indian team play in Pakistan. I mean, who wouldn't want them to come here? And I think they would have enjoyed Pakistan playing over there as well Oh in the yeah, World Cup. it's not about the We players. will It's not about the players. No, not the players. I think fans की बात कर रहा हूँ मैं कि eventually स्टेक होल्डर्स तो fans भी हैं तो हमने भी we would have enjoyed if India would have visited us. We would have loved to see players like Bumrah, Virat, and with playing eventually. Because but you know we this has always been the case with Pakistan, and I do not feel I'm not a lot optimistic about it in the future as well. Let's see what happens आगे चल के. Right. So this was the episode number 4 of 30 Yard Circle. I hope you enjoyed that one. Lots of things are happening in Pakistan cricket right now. Lots of changes. Uh, lots of controversies, and all of this we have discussed here in this session. Domestic cricket is something that we will be looking forward to later on. But yeah, that was Emad Arham from 30 Yard Circle at All Rounders Gym. Thank you so much for watching, and we'll see you for the next one. You got me, you always got